It seems like there is an extra turn taken, so I would request you to kindly stay standing. Thank you so much. Maybe you all can take a seat. Okay, please rise again. Please hear finally. Please put your hands together for the Honorable Chief Guest, Shri Bhima Khandu, Chief Minister, Arunachal Pradesh. Kindly take your seats. A pleasant morning, everyone. I welcome you all once again to the inaugural ceremony of new building block at St. Claret College. Now, as we begin the next round of celebrations, the cultural events, I would request the hosts of the day, Mr. Kenna Burton and Ms. Reena Bengde, to kindly take over. People, please give them a huge round of applause. Mr. Kenna and Ms. Reena. Honorable Chief Guest Shri Bhima Khandu, Chief Minister of Arunachal Pradesh, Guest of Honor Shri Taba Teder, Honorable Education Minister, Shri Tage Taki, Honorable Minister of Agriculture, Horticulture, Fisheries and Veterinary, Shri Chingdu Namchu, Honorable MLA of 47 Namsai Constituency, Right Reverend Dr. John Thomas, Bishop of Itanagar, Reverend Father Pius Thuruthia, CMF, Major Superior of Clerics of India, Shri Dikha Sinchore, ZPM, ZPC, Lower Subansiri District, Shri Swapnil M. Nayak, IAS, Secretary Civil Aviation, Government of Arunachal Pradesh, Shri Bamit Nime, Deputy Commissioner, Lower Subansiri District, Shri Kime Aya, DIGP, Government of Arunachal Pradesh, Dr. Sachin Kumar Singhal, Superintendent of Police, Lower Subansiri District, and Dr. Father Elvin Mendoz, Principal of St. Claret College Zero, Reverend Fathers, Sisters, HODs, well-wishers, parents, media persons, teaching and non-teaching staff of the college, students, and ladies and gentlemen. Good morning, everyone. I feel honored and extremely privileged to welcome each one of you to the inauguration and blessing of this new academic building, which I place on record is an event of high significance. This day will remain an unforgettable occasion that draws unparalleled joy and enthusiasm in all of us as we witness a harmonious blending of
the temple of learning, with home and society. This inaugural ceremony is a moment of pride and celebration for the management, teaching and non-teaching staff, students and parents. It is also a time to thank God for being with the college management throughout the construction of this new beautiful edifice of learning, and to express our gratitude to all those who have been involved in this enormous project. To start off the event, we'd like to welcome each one of you with the dance performance.
Thank you for such a graceful dance performance. Next, we have a video presentation on the college with special focus on the new academic block. Moving on, I'd like to call upon the stage Dr. Father Alvis Mendoz, Principal of St. Claret College, and Father Pius Virutil, Major Superior of Claretians of India, to felicitate the dignitaries. Please give them a big hand of applause. A very good morning to all. Sorry, it's good afternoon, everyone. Shri Pema Khandu, Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh, Shri Taba Tede, Honorable Minister, Education, Cultural Affairs and Department of Indigenous Affairs, Shri Tagetaki, Honorable Minister, Agriculture, Horticulture, Animal Husbandry, Veterinary and Fishery, Right Reverend Dr. John Thomas, Bishop of Itanagar, Father Pius Virutil, our Major Superior of Claretians, the Deputy Commissioner, Superintendent of Police and District Administration, all the HODs from Lower Subansiri District, Zilla Parishad Chairperson Srimati Lika Sinchore and other ZPMs present here, representative from RGU Dr. David Burton, Joint Registrar, Academics and Conference, fathers, sisters, principals and administrators of other educational institutions, President Thanusa Puduku, President Apatani Women's Association, Apatani Youth Association, Apatani Students Union and other members present, members of the Landowners Association, Kalumreru Development Committee, respected Shri Padi Richo, former minister, present here,
members from Apatani Youth Association, members from Arunachal Pradesh Catholic Association, media persons, well-wishers, friends, my dear colleagues and students. This is indeed a historic moment for SCC. The inauguration of the academic block is an event that evokes a sense of satisfaction and happiness among each and every one of us present here. The newly constructed academic block is 74,973 square feet and hosts most of the offices of the college, about 29 classrooms, 4 labs, auditorium, seminar halls, and a few support services for students and faculty. To bring this to completion, we have had the generous contribution of many individuals and organizations. I thank Almighty God for having blessed us and assisted us with every good thing to bring this building to completion. I gratefully acknowledge the role of the Superior General of Clerics, Reverend Father Matthew Vatamattam, and his consultants for aiding us in the construction of this academic block. I take this opportunity to felicitate the dignitaries present here, those who have contributed immensely towards the growth of this institution. Firstly, may I invite Father Pius on stage to do the honors. Firstly, I would like to felicitate our chief guest, Shri Pema Khandu, Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh, whose dynamism, let's give him a big round of applause, whose dynamism has been an inspiration to the youth of our state. Dear sir, we would not have accomplished such a feat of completing this academic block without your support and encouragement. We gratefully acknowledge the monetary support of Rs 2.47 crores given by your August office. This has gone a long way in provisioning for the constructions. As a token of our appreciation, we present to you a souvenir. Ladies and gentlemen, let's give him a big round of applause. Thank you, sir. Next, I would like to call on stage Right Reverend Dr. John Thomas, Bishop of Itanagar. Dear Lordship, your keen interest in the growth and development of SCC has helped us to perform well in all our endeavors. We remain ever grateful for your spiritual patronage and fraternal advice in taking this institution forward. Please accept this token of our love. Thank you, Your Lordship. Next, I would like to invite on stage our guest of honor, Shri Tabatedar, Honorable Minister, Education, Cultural Affairs and Department of Indigenous Affairs, Government of Arunachal Pradesh. Dear sir, we are grateful for the support that we received from the Department of Higher and Technical Education. Your keen interest in the development of education in Arunachal Pradesh is commendable. We thank you for your presence here, sir. Kindly receive this token. Next, I call upon the stage Shri Tagetaki, Honorable Minister, Agriculture, Horticulture, Animal Husbandry, Veterinary and Fishery. Shri Tagetaki has supported SCC immensely. Your words of encouragement and appreciation have always pushed us forward. Your contribution, sir, from the MLA Lad scheme in 2018 for the automation of the college library and your efforts in guiding us to obtain the Chief Minister's fund will be remembered forever. Thank you, dear sir. We also have with us a special guest, Shri Jingnu Namchum, Honorable MLA from 47 Namsai constituency. Dear sir, on your maiden visit to this campus, we wish you God's blessings. We thank you for your presence at this auspicious occasion. Please receive this token of our appreciation.
you, sir. I gratefully acknowledge the role of Shri Padi Richo, former minister who has been instrumental in the establishment of St. Claret College at Salaya in Ziro. Your visionary thinking, sir, is well appreciated. You have provided the college with the needed impetus to scale greater heights in the field of higher education. Here, I would also like to mention the land donor clans who have generously donated the land for the college. We have members from the land donors clan. Shri Kurutai is present here, and other members are also present here. And we also have members from the Kalung Reru Development Committee as well present here. At this juncture, I feel satisfied when I hear from the members of the land donor clans that the land they donated has been utilized by the Claration missionaries in the best possible manner. Thank you for your appreciation. Thank you for your presence. Next we have Shri Simi George, who is the engineer who designed this academic block and guided us in the process of construction. Shri Simi George is the CEO of CBFG Constructions, a company which was established in 1988 and has undertaken many works in India, UAE and Malaysia and other GCC countries as well. We know the pains and the meticulousness with which this building was planned out. Dear sir, thank you for your meticulous planning and technical assistance in the execution of this project. May God bless you. I now take this opportunity to welcome on stage Shri Bamin Nime, SCC Ziro, who is present here for this occasion. We thank you, sir, for encouraging us through your presence. I also thank Shri Kime Aya, DIG Arunachal Pradesh, for his presence here. Shri Kime Aya has seen the development of this institution right from the scratch and is closely associated with its development. Thank you, dear sir, for your presence here. I call Dr. Shri Sachin Singhal, SP Lower Subansiri District. Thank you, sir, for your presence, for your encouragement, and for your association with our college. I gratefully remember the contribution made by the former principals and vice principals of SCC. Very specially, I mention here Reverend Father Tommy Edasheri Parambil, the founder manager of SCC, Reverend Dr. Father Paulson Velianur, the founder principal, who is presently the director of Sannyasa Institute of Consecrated Life, Bangalore. Reverend Dr. Father Sabu George, who is presently the Provincial of Bangalore Province of Clarations. Reverend Dr. Father Binoy Joseph, who is presently the Principal of St. Claret School, Borjar, Guwahati. Reverend Father Jijo K, who is currently working in Macau. Father Dr. Shekhar I, Father George N.V. These have contributed immensely towards the growth of this college. In their absence, I thank them. Let's give them a round of applause.
I take this opportunity to place on record the efforts put in by the following people in the completion of this academic block. Late Shri Jahanuddin, the contractor who started the construction of this building. Shri Tiling Dole, who passed away a couple of months ago, cannot really forget his presence, his guidance in bringing this building to completion. We miss you, dear sir. May God rest your soul. He was a constant supporter and benefactor of the college. I request all the audience to give him a big round of applause. Shri Hage Kano from HK Enterprise. Shri Kanti Das, Genesis Creations for the interior and exterior designing. I welcome all the guests seated here. After the program, after the lunch, kindly take a walk through this building, see the facilities. Most of these interior designings have been done by Genesis Creations, based at Guwahati, by Mr. Shri Kanti Das. We give him a big round of applause. Mr. Shashanka Das and team, Mr. Shamir Aslam and team, Mr. Guddu Mondal, who is the main carpenter who has done most of this work, including the work for this stage. We give all of them a big round of applause and thank them for their contributions. Once again, I place on record my thanks, my deep appreciation for everyone present here, those who have done their bit in bringing us up, helping us grow. The regulatory bodies, DHT, RGU, Dr. Pertin is present here, and also other regulatory bodies which have really helped us reach this day and prove ourselves as providers of quality higher education. We thank you for your contributions in helping and guiding us. Thank you one and all. Thank you, Father. Now, we'd like to call upon the stage Right Reverend John Thomas, Bishop of Itanagar, to address the gathering. Sri Prema Kandu, Honorable Chief Minister and the Chief Guest of this occasion, then Sri Tabatadi, our Education Minister and also for Cultural Affairs and Department of Indigenous Affairs, Sri Taketaki, Minister for Agriculture, the Government of Arunachal Pradesh, Sri Padi Richo, former Minister and the initiator of this concept of this college here, and Deputy Commissioner present here, and all the other eminent government dignitaries and all others present here. This list is too long to mention here. Father Alvin has already acknowledged their presence, and I wish to acknowledge the presence especially of the landowners, because unless they are not given the land, this project would not have been realized. And we are here by bias representing the Malaysian congregation. It is their initiative that has brought this project to completion. And then Father Alvin, who is our principal, who has been the source of all the energy that went into put up this college. So all my dear friends present here, it is with a great sense of satisfaction that I stand here and then present before you this beautiful project that has been completed. This project is being dedicated to the people of Arunachal Pradesh, particularly to the people who are staying and living in around Ziro. This is an example how Catholic Church is trying to bring quality education to the doorstep of people in the remote regions of our country.
Earlier, our students were going very far away to distant cities, metropolitan cities of India, to looking for quality education. Now they need not travel that far. They have such a beautiful college at their doorstep. And this magnificently executed project is an example how if any contribution help is given to the Catholic Church, we will try to do it the best possible way. And anyone who walks through the corridors of this college will say that the money has been put to good use and very economically. And for this, I wish to congratulate Father Alvin and all his team, all the others who contributed also to this. I congratulate them, and may God bless you. And my dear friends, this college is our college. This college will prosper, will progress further if all of us, the general public, the government departments, the university, all of us come together and say, let us make this a bigger success, a greater success. That is my wish and prayer for you. And I wish to place on record now the great appreciation and thanks that we have always received from the government of Arunachal Pradesh and the contribution they have given and the help they will continue to give for the future advancement of this college. So my dear friends, I happily dedicate this college to the people of Arunachal Pradesh and to their educational development. May God bless you. Thank you, Bishop, for those kind words. Next, please put your hands together for the students of St. Clara College Ziro as they would be performing a patriotic dance.
Thank you for such a beautiful performance. Now, we'd like to call upon the stage Reverend Father Pius Thuratil, Major Superior of Northeast India Clericians, for a speech. Let me take 5 minutes. Sri Pemakando, Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh, Right Reverend Dr. John Thomas, Bishop of Patriotic, Sri Tabat Tedir, Honorable Minister of Education, Cultural Affairs and Department of Indigenous Affairs. He has lost his mother 3 days back, 100 years she lived. We express our condolences and also may she rest in God's blessings. I got this news through our Chief Minister's Facebook, so I am all over him. Honorable Minister of Agriculture, Horticulture, Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries, Sri Tage Taki, our MLA, all other dignitaries, Reverend Father Alvin Mendoza, the Principal, the staff, parents, teachers, Reverend Fathers and Sisters and dear students. St. Claret College begins a new chapter by the inauguration of this academic block. This is done in view of developing the center and giving right and holistic education to the people of Apatani Valley, especially the Apatani as well as Nishi population of this state. And we know education is possible only when we want it. So in order to show that, as Bishop was telling us, we Christian missionaries, we belong to the congregation of Clericians, by which we began in the year 2003. And in 20 years' time, we have developed this center to the extent that here you can go for PG as well as researches done. And all you, my dear students, you are special ones here because you are the asset as well as the most important people for this college. So the students who come to this college are everything because we take care of them as their parents, teachers, guides, and give them the best education possible. So be free, and you are always given the right climate to learn. And our parents are our wealth as well as our extended college campus. And we would collaborate with you for all integral growth and right education to your children in this college. The Gamburas, the leaders of the area, and you are our support and strength because with you we can and we will bring peace, harmony, equality and growth in our communities here. The state government is our resources, source of support and help. We need your wholehearted support and willingness to bring up the quality as in academics and teachings. We want you to know that the education that we give to our students are possible only when we receive your generosity and kindness in giving us the needed permissions through the University of RGU to build, to start various courses and the continuity and the improvement of this college. The teachers and staff are the strength who collaborate with the academic councils, with the management who responsibly execute their quality through their teachings, and they are always guided to everyone. And all friends,
neighbors and supporters, our well-wishers who always help us in making the college the best one in this state. And today, in front of you, I would like to honor a few persons who were responsible in putting up this structure. As we know, the founding father, Principal Father Paulson William had the vision in bringing up this center as a center of excellence in education. And it was through him and with him there was a continuous chain of fathers and sisters who worked here, and the staff and the teachers who really were tremendously interested in bringing up the quality of this college. And Father Alvin has already mentioned all of them. I don't want to repeat because of lack of time. But to construct this, it is important that we know the persons who were working behind. First and foremost, Father John Arakaparambil, who is the administrator of our province. He is somewhere there. He, just stand up and show your face, let them see what they are. So, here is Father John. Though he looks small, he is a lion who can attack anything. And he is an excellent executor. So I want to really appreciate and thank him for the services that he did. And the others, Father Walter Naveen, who was the administrator here, the vice principal, and Father Ernest Harmaulon, the vice principal, Father Thomas, who is, I don't know, here he is the vice principal and the administrator, and also the persons who were working with the staff and helpers. I really appreciate their hard work and hard work involved in putting up this structure. And again, the work contractor, Mr. Gahan Mohammed, who is no more, he gave his life by giving the excellent work that he did. And also, I thank the persons who really built up the structure, all the workers, and gratefully remember them. Also, I remember the engineer and architect, Mr. Simi George, who came all the way, who have seen him. And all, in a way, one way or other, there was a chain of people who really made their wholehearted support in shaping this college to this stage. Today, my dear brothers and sisters here, you have the real structure. The structure does not matter unless and until you really give your interest in coming and learning. And when you give your interest and learning, surely we are here with you. The structure is for you and this is built for you, and you can be at ease, and you will always have our support, and you will always be taken into consideration for any kind of developmental work with regard to the education. And I wish all success and steady growth to St. Claret College, and very especially I remember Father Alvin Mendoza, Father Thomas Malangombil and Ernest Marbolong, who are presently working here for the growth of this center, and I wish all of you all the best and showers of God's blessings. Thank you. Thank you, Father, for gracing us with your kind words. Up next, I'd like to call upon the stage Shri Taba Teder, Honorable Education Minister, to say a few words. इस सेंट पैट्रियट कॉलेज जीरो की एकेडमिक ब्लॉक की उद्घाटन समारोह में आए हुए मुख्य अतिथि हमारे युवा एवं कार्यदर्शी मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी, रेवरेंड डॉक्टर जॉन थॉमस, बिशप ऑफ ईटानगर, श्री तागे ताकी जी, ऑनरेबल मिनिस्टर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, श्री जुगनो नामचुम, Honorable MLA 47 Namse,
Sri Padericho, former minister, Sri Bamenimi, SCC Ziro, Kime Aya, DIG Western Zone, Sri Sachin Singhal, IPS, SP Ziro, Sri Sapna M. Naik, IS, Secretary Civil Aviation, ZPC, ZPM, तमाम मेरे प्यारे स्टूडेंट दोस्तों और मीडिया फ्रेंड्स, हमारे लिए एक ऐतिहासिक मोमेंट है कि जब भी मैं जीरो में आता हूं और जब भी सेंट क्लेरेंट में मैंने 2 बार अनऑफिशियली विजिट किया, ना कभी फादर को बताया ना किसी को बताया, जस्ट मैं आके देख के चला गया। और इस बार फादर जो मंडोज ने हमें बार बार टेलीफोन किया, बार बार कहा कि मुझे जैसे भी इस बार इस एकेडमिक ब्लॉक उद्घाटन में आना है कहा, तो इसलिए मैंने कहा कि हाँ मैं ज़रूर ऑनरेबल सीएम के साथ में आऊँगा, क्योंकि आज मुझे यहाँ आने के मौका मिला। इसलिए तहे दिल से मैं प्रिंसिपल मंडोज फादर को बहुत बहुत धन्यवाद। सही मानो तो हम एजुकेशन जो कहते हैं, जो 5 पिलर के ऊपर ही निर्भर करते हैं। एजुकेशन शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल पीपल, शुड बी इक्वलिटी टू ऑल पीपल, शुड बी क्वालिटी वन, शुड बी अफोर्डेबल टू ऑल पीपल, एंड साथ साथ में शुड बी अकाउंटेबिलिटी। जो भी स्कूल चलाते हैं, जो भी स्कूल रन करते हैं, शुड बी हैव अकाउंटेबिलिटी। और क्लासरूम में हमारे बच्चों को क्या करना है? क्लासरूम में बच्चे स्टूडेंट शुड हैव थिंकिंग, उसके साथ एंगेजिंग एंड अंत में जयपुर। सो स्टूडेंट शुड हैव एंड टीचर शुड हैव थिंकिंग, एंगेजिंग एंड जॉयफुल। अगर ये 3 प्रिंसिपल चले तो हम बच्चों के साथ एजुकेशन सिस्टम को बहुत आगे ले सकते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है। हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आया, उसकी दूसरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया 1986 में, और 2020 में जो 34 इयर्स के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आया। और इस जो नया एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेके आया, ये सबसे अच्छा एजुकेशन पॉलिसी है जो हमारे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर लेके आया, इंडिया सरकार ने लेके आया। ये मैं कहूँगा कि जितना भी एजुकेशन पॉलिसी बनाया, उसमें सबसे अच्छा एजुकेशन पॉलिसी ये 2020 है। उसमें हर तरह को ध्यान में रखा गया है, बच्चों को ध्यान में रखा गया है, जब बच्चे बड़े होते हैं उसके ध्यान में रखा गया है, कॉलेज में जब जाएंगे उसके लिए ध्यान रखा गया, यूनिवर्सिटी में जब जाएंगे तो ध्यान रखा गया। और सबसे ज़्यादा एजुकेशन बच्चों को रिसर्च के ऊपर में इसको बहुत ध्यान दिया गया है। अगर आज आत्मनिर्भर भी करना है, आज हमारे भारतवर्ष में अपने बच्चे ही साइंटिस्ट है, बच्चे ही सब कुछ डेवलप करते हैं। अगर आत्मनिर्भर बनना है तो बच्चों को हमको सब ध्यान देना है, और बच्चों को, स्टूडेंट को हम रिसर्च के लिए फैसिलिटी देना है। इसलिए ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये रिसर्च को बहुत इम्पोर्टेंट दिया गया है। और बच्चों के लिए जो प्री प्राइमरी है, ईसीसी के रूप में शुरुआत किया है, ताकि 3 साल से लेकर 6 साल तक की उम्र में बच्चों के ब्रेन ग्रोथ 80 से 95% होता है। उस दौरान अगर बच्चों को अगर सही सलामत तालीम दिया जाए, इसको शिक्षा के बारे में सही सिखाया जाए, और साथ साथ में उसमें अपनी मातृभाषा को उसमें अगर हम सिखाया जाए, बच्चे आगे चलकर फाउंडेशन मजबूत होगा। इसके नाते हमारे पेमा खान सरकार ने अरुणाचल में 300 स्कूल को हम इसी से शुरुआत कर रहे हैं, और हमने ऑलरेडी फ्लैग ऑफ भी कर दिया लास्ट बार में। जितना भी अरुणाचल में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर विधानसभा में 5-5 स्कूल लेके हमारे 60 विधानसभा है, हम 300 स्कूल को प्री प्राइमरी स्कूल यानी कि ईसीसी से शुरुआत कर रहे हैं। और हमारे भारत सरकार की तरफ से जो आईसीसी में देता है प्री प्राइमरी स्कूल बोल के, उसमें भी हमने 550 स्कूल को दिया है, जो हमारे सरकारी स्कूल में पहले ये कभी फैसिलिटी नहीं मिलता था। सिर्फ जो प्राइवेट स्कूल है, जिसके पास धनराशि है, पैसे है, वो सिर्फ प्राइवेट स्कूल में पढ़ के उसके आपके
की सुविधा मिला, लेकिन इस बार जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया इसमें सभी चीज़ को इसमें लिया गया है। आज हमारे जो अरुणाचल भारत जब स्वाधीन हुआ, हमारे अरुणाचल 1947 में सिर्फ 2-3 स्कूल था, कॉलेज की नाम निशान नहीं था। हमारे फर्स्ट कॉलेज आया जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पासीघाट में। उसके बाद आज हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज 19 गवर्नमेंट कॉलेज है। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज जो 20 प्राइवेट कॉलेज है, हमारे 9 यूनिवर्सिटीज है और 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और हाल ही में हमारी पेमा खांडू सरकार ने ऑलरेडी अरुणाचल यूनिवर्सिटी अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सैंक्शन कर दिया है। हम पासीघाट में उसके बीच तुरंत ही शुरू करने जा रहे हैं। इसलिए हमारी शिक्षा की दौर में जो अर्ली 60s और 70 के कंपेयर किया जाए तो आज हमारे अरुणाचल शिक्षा बहुत आगे बढ़ चुका है। हमारे स्कूल 3600 प्लस स्कूल है। हमारे कॉलेजेस अब हमने बताया, यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी आप बना सकते हैं। आज जैसे हमारे सेंट क्लर्क कॉलेज है, अगर इसमें आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सब कुछ होगा, ये अपने आप एक दिन आपको मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। आपके यहाँ यूनिवर्सिटी भी हो जाएगा, आपको ऑटोनोमस हो जाएगा। आपको आज जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से हर चीज़ उसके ऊपर ही निर्भर करता है, लेकिन आने वाले समय में ये अपने आप आपको एक यूनिवर्सिटी बन जाएगा। इसलिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उसकी आपको आज से नींव रखना कि आने वाले 2035 या 40 तक ये एक अपने आप से एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए। इसके लिए फादर आप सबको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। मैं अभी फादर से चर्चा कर रहा था कि यहाँ बच्चे पूरे अरुणाचल से आए हुए हैं। तिराप से भी बच्चे हैं, लोहित से भी बच्चे हैं, द्वांग से भी है। यही नहीं, हमारे बच्चे इवन मणिपुर से भी है बोल के बता रहे हैं। और एक बच्ची स्टूडेंट इवन बेंगलोर से मुझे बता रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम पेड इंडिया, पेड अरुणाचल रूप में चलना चाहिए। हम सोच रहे थे कि सिर्फ यहाँ पे निशी और आपत्ति सिर्फ स्टूडेंट होगा, लेकिन जब फादर मंतोष ने मुझे बताया कि पूरे इंडिया से बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो इसके होने से हमारे एक दूसरे के आपस की कल्चर है, रीति रिवाज है, धर्म है, सब एक दूसरे को जान पहचान बनाना है और पेड इंडिया के रूप में लेके जाना है, पेड अरुणाचल को लेके जाना है। और इसके लिए ये सिर्फ एक ही धर्म के ऊपर भी निर्भर नहीं करना, यहाँ हर सब धर्म को हम रिस्पेक्ट करना है। सब धर्म के बच्चे यहाँ पढ़ना चाहिए। हम हमेशा सब टीम इंडिया की, पेड इंडिया के रूप में ले जाना चाहिए। और ये जब भी मैं अरुणाचल यूनिवर्सिटी में जब कॉन्वोकेशन में जाता हूँ, जब मेडल बच्चों की कौन सा कॉलेज की जो मेडल मिलता है, इस लास्ट ईयर में हमने जब कॉन्वोकेशन अरुणाचल यूनिवर्सिटी गया, वहाँ जब रिजल्ट देखा गया तो आपकी मैक्सिमम जो टॉपर सेंट क्लर्क के यहाँ से था। इसलिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ, क्योंकि मुझे ऑनर मिला कि आपके बच्चों को मुझे मेडल देने के लिए राजीव गांधी यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन में यहाँ के बच्चे और हमारे जोलन में कॉलेज है डॉन बॉस्को कॉलेज, वहाँ के बच्चे को बहुत से मतलब प्राइज टॉपर के लिस्ट में मिला। इसलिए मैं फादर और बिशप आप सबको बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप सबने हमारे अरुणाचल शिक्षा को आगे ले जाने के लिए जो मेहनत कर रहा है, इसलिए मैं अरुणाचल सरकार की ओर से, मैं अपनी ओर से बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इसको और आगे ले जाना है, और आगे हमारे शिक्षा नीति को, शिक्षा को और आगे बढ़ाना है, क्योंकि शिक्षा है तो प्रांत आगे बढ़ेगा, शिक्षा है तो देश आगे बढ़ेगा, शिक्षा है तो सब कुछ मुमकिन है। तो इसलिए हमारी ये शिक्षा सिर्फ सर्विस के लिए हम शिक्षा नहीं देना है। फादर आप जितने भी विषयों में हैं, जितने भी आप एजुकेशनिस्ट लोग हैं, एकेडमिशियन हैं, आप सबसे मैं ये दरखास्त करूँगा कि आप स्टूडेंट को सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस मिलने के लिए IAS, IPS या UPSC में क्रैक करने के लिए सिर्फ मत पढ़ाइए। आप पढ़ाइए बच्चे को एक अच्छे नागरिक बनने के लिए, एक अच्छे इंसान बनने के लिए। अगर
बच्चे अगर अच्छे नागरिक बनता है, हमारे देश आगे बढ़ेगा, हमारा प्रांत आगे बढ़ेगा, हम आपस में भाई भाईचारे में रहेगा, हम पेड़ अरुणाचल के में रहेंगे, हम पेड़ इंडिया में रहेगा। इसलिए मैं यहाँ जितने भी बच्चे आए हैं, आप सबको यही आह्वान करता हूँ कि आप सब पढ़ाई लिखाई ध्यान से पढ़ना है, लेकिन सिर्फ वो आईपीएस या आईएएस बनने के लिए, यूपीएस क्रैक करने के लिए मतलब मत कीजिएगा। आप अच्छे इंसान बनने के लिए कोशिश कीजिए। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, यही अपने भाषण को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल। Thank you for those words, sir. The next program on our agenda is an Arunachali dance performance. शीशभूषण कंदी की धारा, प्रभात किरण जुबित देश अरुणाचल हमारा, अरुणाचल हमारा।
Thank you for that performance. Moving on, we have a group song performance by the SCC Choir.
Thank you, SCC Choir, for such a melodious performance. Moving on, we will now start the felicitation program to the rank holders of St. Claret College Ziro. We'd like to call upon the stage our chief guest of today's event, Honorable Chief Minister Shri Pema Khandu, to felicitate the rank holders and thereafter for a speech. I request Ms. Rashia Basti to be present on the stage to call out the names. I would request all the rank holders to please pay attention now. I'm going to start calling your names. So the first rank holder is Miss Loya Saya. I would request you to kindly come on the stage. She is also the overall topper in Rajiv Gandhi University. She is going to receive another award called Dani Tabin Yanya Award, and that will amount to rupees 10,000. I would request Ms. Loya Saya to kindly come on this stage. The next person is Ms. Kamang Libang. Kindly proceed to the stage to receive the memento. Ms. Tarmini and Ms. Habung Mamung, I request you all to please come to the stage to receive the token from the chief guest. Ms. Kamang Libang and Ms. Habung Mamung. I will announce name of the other rank holders and kindly join us on the stage for a photo session. The names are Ms. Neej Kobo, Ms. Ricardo Talyan, Ms. Take Napi, Ms. Naraya Yong, Ms. Biri Nani, Ms. Mehin Demik, Ms. Tehi Yan, Ms. Nimrit Honda, Ms. Muren Mili, Ms. Taso Pamon, Ms. Rido Neka, Ms. Nani Yam, Ms. Tage Tunya, Ms. Mehin Nancy. I would request you all to kindly come on the stage. Ms. Tar Meni. I would request the rank holders to kindly come on this stage as soon as possible. We are awaiting a photo session. Now I would request Honorable Chief Minister to kindly say a few words. Sir, please. Present on this auspicious occasion, Right Reverend John Thomas, Bishop of Itanagar, Father Piyush, Major Superior, Northeast Claretian, Principal of St. Claret College Ziro, Dr. Father Alvin Mendoza, and accompanied along with me my Honorable Education Minister, Shri Tabatadir ji, Honorable Minister Agriculture and Allied, Shri Tagitaki ji, Honorable MLA Tamsai Shri Jignu ji, former Minister Shri
Padirichoji, officers, senior officers from the Civil Aviation Department, Secretary, यहाँ के Deputy Commissioner, DIG, SP, all the senior officers from lower Subansiri district, Ziro, and present here my dear fathers and sisters, and also representative from various schools, my dear students or media ke doston. Firstly, I must thank the management of St. Clariot College for inviting me again and giving this wonderful opportunity to inaugurate this wonderful academic, new academic building. The same building which I had laid the foundation stone way back in year 2018. But I must thank the architect and also the builders, the contractors and all the supervisors. Despite of the COVID pandemic challenge, they have built up this infrastructure very nicely. It has done so good. It is not only an asset of St. Clariot College or Ziro, I feel that it is a wonderful asset for the entire Arunachal Pradesh. आज समय का थोड़ा सा मेरा short fall हो रहा है because I have to attend one public function also. Thereafter I have to go back to Inauguration. So यहाँ पे आज काफ़ी खुशनसीब है अपना राइट रेवरेंड जॉन थॉमस जो ईटानगर का जो बिशप आया है हम सबको ब्लेस किया और पूरे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से ब्लेस किया. तो मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ पे जितने भी जो मैनेजमेंट का लोग काम करेंगे इस कॉलेज का और साथ में जितने भी जो हमारा जो यंग फ्रेंड्स है जो इस कॉलेज में एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, आप सभी का इस एकेडमिक सेशन यहाँ पे एकेडमिक इस बिल्डिंग में आप सब लोगों को सफलता मिले और आप सबका स्वास्थ्य अच्छा हो. मैं भी भगवान को ये प्रार्थना करता हूँ. एजुकेशन क्षेत्र में जैसे हमारा कलीग श्री तबातादरी जी एस ही हैज राइटली मेंशन कि हमारा खास करके जो जितने भी अपना क्रिश्चियन समाज में जो स्कूल्स जो खुला हुआ है, स्कूल से दूर दराज में स्कूल्स खुला हुआ है और कॉलेजेस है, अरुणाचल का हमारा जो क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए बहुत मदद किया है. हमारा जो कार्यकाल में हमने काफ़ी कोशिश किया कि जितने भी जो इस प्रकार से जो NGOs जो काम करते हैं अरुणाचल प्रदेश में, चाहे वो अपना क्रिश्चियन से हो, चाहे वो BKV के माध्यम से हो या रामकृष्ण मिशन के माध्यम से हो, इन सभी स्कूल्स को गवर्नमेंट के ओर से भी मदद करने के लिए कहीं जगह में कॉर्पस फंड के रूप में हम लोग ने दिया, कहीं जगह इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के रूप में हम लोग ने यहाँ पे दिया हुआ है. मगर आज मैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मैंने पहले कहा सेंट क्लेरियट कॉलेज का जो इतना सुंदर एकेडमिक बिल्डिंग जो आप लोग ने बनाया, ये तो बहुत ही एक एग्जाम्पलरी आप लोग ने सेट किया है कि क्वालिटी ऑफ वर्क और यहाँ का जो डिज़ाइन है बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत ही सुंदर है. आई थिंक ऐसा सुंदर कॉम्प्लेक्स तो शायद अरुणाचल में तो बिल्कुल नहीं है, मगर नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत ही कम जगह में इसे देखने को मिलेगा. सो इट्स अ वेरी गुड एसेट एंड वी ऑल शुड लर्न कि कम बजट में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी किस प्रकार से बनाया जा रहा है. और साथ साथ मैं अपनी ओर से सरकार के ओर से भी यहाँ के लैंड डोनर्स एंड सभी जो इस एकेडमिक बिल्डिंग को सफलता में लेके आने के लिए जितने भी जो डोनेशंस इंडिविजुअल बेसिस पे भी दिया होगा या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी डोनेट किया होगा, उन सभी डोनर्स को भी मैं अपनी ओर से बहुत तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आप सभी का कारण से ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अरुणाचल का और देश का बच्चों लोगों के लिए ये बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा तैयार हुआ है. एजुकेशन के क्षेत्र में अरुणाचल हैज़ बीन ए वेरी लेट स्टार्टर दैट वी ऑल नो. और अभी लेकिन ओवर द इयर्स अभी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है थैंक्स टू ऑल दोस education partners from NGO like Christian Missionaries, RK Mission, VKB और सभी बाकी NGOs भी जो एजुकेशन में फोकस किया है. It has been rightly pointed out by my colleague Honorable Minister Education Patriotic ji. After independence we had started with a very few number of schools only. At present we have more than 3,000
schools across Arunachal Pradesh. Now, what we are stressing is that definitely number does matters. We need to have good education, but my that personal which I'm trying is that quality education. Number is good, but we should insist more into quality. And we must thank Honorable Prime Minister Narendra Modi Sahab, under which one of the biggest reform in education sector, which he has brought in the year 2020, National Education Policy. Some people may call it as New Education Policy also. It is a very big, there is a very big reform in that education sector. And let me acknowledge that the new infrastructure building, academic building that it has come up here in St. Clarion College, it is in line with that new education policy. न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत में जो प्रोविजंस चाहिए होता है, दिट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल दैट वी कैन शोकेस टू अदर स्टेट्स. सो इन कमिंग डेज हम सब का प्रयास जो है क्वालिटी एजुकेशन में होना चाहिए. और जैसे मैंने कहा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत बड़ा रिफॉर्म लेके आया हुआ है. देश में हर एक राज्य को, ऑल द स्टेट्स हैज टू इम्प्लीमेंट दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी बाय 2030. So in our state also we have already composed our state task force, and accordingly several brainstorming meetings has been taking place. Accordingly, my minister has informed that we have started early child care centers in every district. We are starting with 300 ECC models, and slowly we will be updating it. Slowly we will be again taking forward it to all the colleges. अभी यहाँ पे जितने भी शायद सेंट क्लैरियन कॉलेज में जो बच्चे लोग आज दूर दराज अक्रॉस ऑल सोसाइटीज एंड डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे जो एडमिशन लिया होगा, मैक्सिमम आई बिलीव बहुत सारे लोग गवर्नमेंट स्कूल से भी पास करके आए होंगे. आप लोगों का जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, मैं भी एक गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ के आया हूँ. तो गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या दिक्कत होता है ये हमको भी पता है. तो अभी हम लोग जितने भी जो गवर्नमेंट कॉलेज का फेस लिफ्ट हम लोग करना शुरू किया है गवर्नमेंट स्कूल्स का. तो धीरे धीरे अभी जितने भी जो हमारा हायर सेकेंडरी फॉलोड बाय सेकेंडरी, इसके बाद मिडिल लेवल, प्राइमरी लेवल में जाके हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर फेस लिफ्ट में हम लोग अभी ध्यान दे रहा है. तो जहाँ तक अभी क्वालिटी का जो बात है, बीच में थोड़ा बहुत डिग्रेडेड हो गया था, ये आप लोग भी एक्सेप्ट करेंगे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च ए वेरी गुड प्रोग्राम like right to education, but unfortunately that right to education in Arunachal Pradesh was meant for right to education, but it was mostly focused on contractual benefit. जितने भी जो आसपास का गांव था, सब जगह स्कूल ही स्कूल खोल दिया. तब जाके हम लोगों का क्वालिटी में काफ़ी शेक हो गया. अभी पुराना जमाना का अगर देखें तो उसमें स्कूल्स बहुत कम था, मगर दोज वेर सॉलिड एंड वेरी गुड स्कूल्स ऑफ गवर्नमेंट. उसमें टीचर्स भी, जितने सब्जेक्ट टीचर्स हुआ था वो भी पूरा प्रोविजंस वहाँ मिलता था. हमारा हॉस्टल फैसिलिटीज़ वगैरह पूरा था. तो क्वालिटी एजुकेशन काफ़ी अच्छा था पुराना ज़माना में. बीच में थोड़ा सा जो RTI राइट टू एजुकेशन का हम लोग ने जो यहाँ पे एनफोर्स किया, तो वहाँ पे शायद डिपार्टमेंट एजुकेशन और कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के लोग अच्छा से प्लानिंग नहीं करने का वजह से वो जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेनिफिट में चला गया. हर एक जगह में स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर बनते चला गया. इट कुडंट बी सपोर्टेड बाय सफिशिएंट मैन पावर एंड टीचर्स आल्सो एज वेल. तो इसमें काफ़ी फर्क हो गया. अभी धीरे धीरे आवर गवर्नमेंट इज ट्राइंग जितने भी जो स्कूल्स है उसको क्लब करके हम लोग सेंट्रलाइज वे में फंक्शनिंग करने का. जीरो स्कूल एनरोलमेंट काफ़ी था, जिसमें बच्चे लोगों का एडमिशन वाज जीरो, मगर टीचर्स जो वहाँ पोस्टिंग था उसको भी वी हैव शट डाउन अराउंड 400 जीरो एनरोलमेंट स्कूल इन अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश. तो एजुकेशन इज आवर फ्यूचर और यूथ लोग इसमें अच्छा से जुड़ना चाहिए. हमें पता है कि आज सेंट क्लेरियन कॉलेज फादर एल्विन के साथ में मैं डिस्कस कर रहा था. तो यहाँ का जो एकेडमिक का जो यहाँ पे प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स लोग हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से आप लोगों को यहाँ पे गाइड कर रहा है. आप लोग जितने भी जो बच्चे यहाँ पे आज पढ़ रहा है, आप लोग अपना समाज का फ्यूचर है, अपना राज्य का फ्यूचर और अपना इस देश का फ्यूचर है. तो ये जो कॉलेज का जो अभी टाइम फ्रेम है उसमें आप लोगों को बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन करते हुए टू लर्न न्यू थिंग्स.
और यहाँ आके अच्छा लगा है कि हमें पता चला है कि अंडर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी सेंट क्लेरियट इज द ओनली कॉलेज विच ऑफर्स मास कम्युनिकेशंस इन डिग्री लेवल। तो उन लोगों का मैं मास कम्युनिकेशन का सेल भी मैं देख के आया, तो बच्चे लोगों से भी वहाँ पे देखा किस प्रकार से प्रोजेक्ट्स बना रहा था। थोड़ा दिन पहले वी आर सीइंग द वीडियो आल्सो, दे हैव डन इट वेरी नाइसली। सो इस तरह से जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेनिफिट आप लोगों को मिल रहा है अरुणाचल प्रदेश में कहीं भी नहीं मिल रहा है। तो मेरा मैसेज जितने भी जो हमारा यंग फ्रेंड्स है, जो यहाँ के स्टूडेंट्स है, आप लोगों को मैं दोबारा में रिक्वेस्ट अनुरोध करेंगे, आप लोगों का पेरेंट्स माँ पिताजी बहुत मेहनत करके आप लोगों को इस ऐसे अच्छा इंस्टीट्यूशन में आप लोगों को भेजा है एजुकेशन को सीखने के लिए। तो यहाँ पे अपना प्रिंसिपल फादर आलविन के साथ में जितने भी फैकल्टी मेंबर्स, यहाँ के स्टाफ, उन लोगों के साथ में आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अच्छा से सीख के और भी आप लोगों को पढ़ाई आगे तक लेके बाद में इस राज्य का नाम आप लोगों को ऊंचा करना है। तो इतना कहते हुए अभी आप लोगों का फादर ने हमको बताया कि यहाँ पे जो सुबह में देखा था वहाँ से कैंपस पूरा बेलकोनी से, तो यहाँ पे जो ज़रूरत है शायद गेम्स एंड स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे गैलरी, छोटा सा गैलरी का वहाँ पे ज़रूरत है बोल के बताया। इसका असिस्टेंस भी मैं आप सबको वादा करता हूँ दैट इट विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम गवर्नमेंट। साथ में अपना डॉन बॉस्को के डायरेक्टर एंड माय वेरी गुड फ्रेंड फादर जोश इज आल्सो हियर, एंड डॉन बॉस्को भी वहाँ पे बहुत अच्छा कॉलेज, वहाँ पे एक्टिविटीज़, वहाँ पे एकेडमिक्स भी बहुत अच्छा है। तो हमारा टाइम में डॉन बॉस्को को भी मैंने काफ़ी सपोर्ट किया है, सेंट क्लेरियट को भी सपोर्ट करेंगे, फ्यूचर में और भी अच्छे से आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, प्रोवाइडेड दैट इट शुड बी रिजल्ट ओरिएंटेड। यहाँ का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, जितना रिजल्ट अच्छा होगा गवर्नमेंट की तरफ से और भी हम लोग सपोर्ट करेंगे। So with this, thank you so much, Bishop of Itanagar, like Reverend John Thomas ji, Principal Dr. Father Alvin ji, and Major Superior Northeast Clerician Father Pius ji, and all my dear fathers and sisters for inviting me in such a wonderful occasion and giving me such a good opportunity to dedicate this project for the students of this college and for the entire state and for the nation. Thank you. May God bless you all. Thank you. Jai Hind, Jai Hind. Thank you for those encouraging words, sir. Next, we'd like to call upon the stage Dr. Jenny Jami, the staff coordinator, to propose the vote of thanks. Good afternoon, everyone. I, on behalf of the college, would like to take this privilege to deliver the vote of thanks on this auspicious occasion. At the very outset, we express our heartfelt gratitude to our chief guest, Shri Pema Khandu, Honorable Chief Minister, Government of Arunachal Pradesh, for availing his precious time to inaugurate the new academic block of the college. Thank you so much, sir, for your esteemed presence. We also express our deep gratitude to Right Reverend Dr. John Thomas, Bishop of Itanagar, for his gracious presence. We would also like to sincerely thank Shri Engineer Tabatedir, Honorable Minister, Education, Cultural Affairs, Department of Indigenous Affairs, for his kind and valued presence. We would also like to sincerely thank Shri Engineer Taki, Honorable Minister, Agriculture, Horticulture, Animal Husbandry, Veterinary, Dairy Development and Fisheries. Thank you, sir. We would also like to thank Shri Jignu Namchon, Honorable MLA, for his esteemed presence today. Our deep gratitude to Reverend Father Pius Tiril, CMF, Major Superior of Northeast Independent Delegation. We are very blessed to have you, Father, in our midst. We would also like to thank Shri Padi Richo, former MLA and Minister, for his kind presence and constant support. Our sincere gratitude to Swapnil M. Naik, IAS, Secretary, Civil Aviation, Government of Arunachal Pradesh, for his kind presence. We would also like to extend our gratitude to Shri Bamin Ime, Deputy Commissioner, Ziro, Lower Subansiri District, and the team of the Head of Departments, District Administration. We would also like to extend our heartfelt gratitude to Shri Kime Aya, IPS DIG Government of Arunachal Pradesh, to Dr. Sajid Singhal, Superintendent of Police,
and to the team of police personnel. Our sincere gratitude to the Claritine Congregation, Delegation Council of Northeast Independent Delegation, governing body, all Claritine priests, parish priests of Ziro Parish, other priests and religious congregation. Thank you all for your gracious and constant support. We also thank the leaders of local communities, the Zilla Parishad members and leaders of NGOs who have come to support us in this occasion. Thank you all for your support. We would also like to express our deep sense of gratitude to the members of the landowner clan and all benefactors of the college. Thank you all for your kindness and generosity. Our sincere gratitude also goes to all principals, school principals and headmasters who have come here to celebrate this inaugural function with us today. We also extend our gratitude to all special invitees, architects, engineers and contractors who have joined us today in this special occasion. We would also like to convey our sincere thanks to all the media persons for the media coverage and also all the personnel for the PA systems for arranging the logistics for the program. We would also like to thank all the alumni, parents, friends and well-wishers who have come here to join us in our inaugural function. We thank the management, principal, vice principal, program committees, faculty of the college, our dear students and volunteers, and other collaborators who have worked tirelessly towards the preparation and conduct of the program. Last but not least, I take this opportunity to once again thank all the people who have supported us morally, financially, and spiritually in making this endeavor a reality. With these words of gratitude, I conclude. Thank you all. Thank you very much, ma'am. To conclude today's program, I'd like to request everyone to kindly stand up for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे A brief announcement. I would like to request the dignitaries who are seated in the sofas to kindly proceed to the backstage for the lunch. The volunteers can lead them to the dining tables. The HODs, the officials, the ZPMs, the fathers, sisters, and other special invites and special guests will go down to room number 303. The volunteers can lead them to room number 303 down this auditorium for their lunch. There is also room number 203 and 003 on the ground floor, 203 on the second floor. The HODs, officials, ZPMs,